गुड मॉर्निंग क्लास. सो येस्टरडे वी रेड चैप्टर 1. हमने रिवीजन किया चैप्टर 1 का, टू बिग टू स्मॉल. सो अब हमने चैप्टर का रिवीजन किया है तो एक्सरसाइजेस की भी रिवीजन करना ही चाहिए, राइट? सो लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सरसाइजेस अगेन. एंड दोज हु हैव नॉट रिटन द एक्सरसाइजेस इन योर कॉपी, प्लीज़ आप लोग लिख लो कॉपी में. इट विल बी गुड फॉर बोथ यू एंड अस. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, so you have to complete these sentences with too big, too small. All right. So Shanu is too big to sleep in the baby's cot, too small to walk to school alone, too small to carry the baby, too small to make dosas at the stove, too big to wear her old pink frock, too big to climb up on Dadu's back. Now answer these questions. Why is Shanu puzzled? A, B, C options दिए हैं. You have to choose one. So Shanu is puzzled because she does not know what is she the right size for, whether she is too big or too small. Okay, name any 3 things that Shanu is the right size for. Shanu is the right size for listening stories from her dadi, okay, going to school, and to climb on her abbu's shoulders. Okay, you will always be the perfect size. They are the family of Shanu. What will Shanu always be the perfect size for? Shanu will always be the perfect size for the love and affection of her family. Okay, or you can also write for a warm and wonderful hug from her family. How do you think this makes Shanu feel? This makes Shanu feel loved and wonderful. Okay, now I am sure you all must be knowing noun. What is noun? Noun आपको पता है, it's a name of a person, place or thing. जो things होते हैं ना वो common noun में आते हैं. all right, so singular plural भी आप जानते हो. if it is one, so it is singular. okay, urban, fine. सिंगुलर है, ये एक है सिर्फ, सो ये सिंगुलर है. लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, 3, 1 2 3, सो वी ऐड एन एस टू द स्पेलिंग. ठीक है, हम वहाँ एस ऐड कर देते हैं स्पेलिंग में, सो इट बिकम्स 3 bins, BINS. okay, so this side is the singular one, this side is the plural one. We have to look at the picture and we have to fill the spellings. okay, so this is a school. If you see, this is a school, SCHOOL, and here it is 2 schools, right? So you will add an S to the spelling, and the same goes for the other ones also. Bicycle, bicycles, book, books, flower, flowers. okay, so in this one we have to see if we can count these things or not. जैसे जिस चीज़ में आप S लगा सकते हो ना, so you can count them. पर जिसमें हम S नहीं लगा सकते जनरली, जैसे मिल्क को हम मिल्क्स नहीं बोलेंगे, है ना, 4 milks, no, we do not say like that, right? सो कुछ नाउन्स जो है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कुछ नाउन है जो नाउन्स हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये उन्हीं का लिस्ट है. हमें येस या नो लिखना है. येस, वाई ऑन विच वी कैन काउंट, एंड एन मतलब नो, ऑन विच वी कैन नॉट काउंट. सो मंकी, येस. बॉटल, येस, मंकीज, बॉटल्स. सॉल्ट्स, नहीं, वी कैन नॉट राइट सॉल्ट्स. एन. Train, yes. Money, yes. Apple, yes. Song, yes. We write, we say 1 song, 2 songs. Music, लेकिन हम म्यूजिक को म्यूजिक्स नहीं लिखते, म्यूजिक ही लिखते. दैट द म्यूजिक इन द सॉन्ग वाज नाइस. यस. फूड, फूड को अब पर्टिकुलर फूड की बात नहीं हो रही है, राइट? सो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन की तरह लेते हैं, सो इट इज़ नो. प्लेट, प्लेट्स, सो यस. फूड में फूड्स एस नहीं लगाते हम जनरली, इट्स नॉट द राइट वे टू से फूड. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. So these are some exercises and we have to complete them with the help of the words given in the boxes in both. Okay, so Mehul is tall enough to ride the roller coaster.
Swati is old enough to ride the bus alone. Asif is small enough to fit into the skirt. The luggage is light enough for me to carry. The house is now quite enough for us to study. Now here, this we have to, you have to imagine as if you are Shanu, okay, and you have to fill it with the help of the words given. So I am Shanu. I go to school every day. Abu carries me on his shoulders. Dadi tells me stories. I love my family. Okay, so that's it for this exercise.